दुनिया घूमना, ट्रैवल करना किसको नहीं पसंद? बट बिफोर द फन पार्ट बिगिंस, प्लानिंग द ट्रिप फील्स लाइक अ फुल टाइम जॉब. Where to go, when and how to book, check-in कब करना है, and the list just goes on. But did you know you can have a travel assistant right there on your phone on the Air India app? आओ तुम्हारे ट्रैवल असिस्टेंट से तुम्हारी जान पहचान करा देते हैं. Firstly, अगर ऐप नहीं है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो. You can start using the app right away. No sign up or sign in is required. For existing Maharaja Club members, simply log in using your mobile number, email or your Maharaja Club ID to access exclusive benefits. अब डेस्टिनेशन चूज करना इतना आसान है, इंस्टाग्राम पे ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स ही इतना बता देते हैं. लेकिन आइटिनरी, आई नो, स्कूल के होमवर्क की याद दिला देती है. इसलिए सब छोड़ो, AI.G है ना. It's not just any chatbot you found online. This can actually be your personal travel buddy. You can ask AI.G stuff like, help me plan a 4-day trip to Dubai. Or what is a must-try delicacy in Paris? Any hidden gems in New York? AI.G will create a personalized itinerary, including sightseeing, food spots, shopping ideas, day-wise and interest-wise. Amazing, right? And now a question that comes to every traveler's mind. मेरी flight तो time पे है ना? Just open the Air India app, tap on flight status, enter your flight number or route plus date or your PNR number and you will instantly know whether your flight is on time, delayed or boarding. You will also be able to see if there has been a gate change and when the boarding has started. और अगर तुमने बुकिंग एयर इंडिया की ऐप पे की है तो यू विल गेट पुश नोटिफिकेशंस फॉर एवरी अपडेट रियल टाइम. और क्या चाहिए? अब आते हैं ऐसी बात पे जिस पे कोई नहीं हेल्प करता यार. लॉन्ग क्यूज फॉर चेक इन? वेल, नॉट एनी मोर. Open the app, tap on menu, select check-in. Now enter your PNR, your last name, choose your seats, confirm your details and that's it, your web check-in is done. वैसे तो ये चीज़ बहुत ही simple है but it is so important. You can check in online within minutes and drop your bags at the dedicated baggage drop counters for Air India when you reach the airport. You can use their web check-in facility up to 2 hours before departure for international flights and up to 1 hour for domestic trips. Check-in करते ही you will get your boarding pass on the app and on your email. You can add it to DigiYatra or even add it to your Apple or Google wallets. And you can even view your boarding pass in the My Trip section on the app. For anyone who gets anxious about their bags, like me, here is a lifesaver. Baggage tracking that works just like cab tracking. Air India's iVision does not only scan your baggage tag, it also scans your boarding pass and your e-ticket to add it to your My Trips. Just go to menu and click on Track Your Bags. You can either mention the PNR that is mentioned on top of your boarding pass or simply scan the barcode on your bag tag using the iVision. You will now know the exact location of your bag, whether it's loaded, offloaded or if it's still chilling at the airport. Just tap, scan another bag and you can track them all under My Bags. मतलब जो आप मैन्युअली सर्च करते थे, दिस ऐप इज गोइंग टू डू इट फॉर यू जस्ट बाय स्कैनिंग बारकोड्स. खुश तो काफ़ी हो गए होगे तुम. मैंने तो ट्रैवल करना ही नहीं छोड़ना है अब एंड ऑल थैंक्स टू द एयर इंडिया ऐप मेरे जैसे आवारों की लाइफ इतनी आसान कर दी एंड नाउ आई कैन नॉट इमेजिन ट्रैवलिंग विदाउट इट. बिकॉज जब ऐप ही इतनी स्मार्ट हो तो ट्रैवल करना और भी एफर्टलेस बन जाता है. सो इफ यू स्टिल ट्रैवलिंग विदाउट दिस ऐप, it is high time you download it right now and you'll know exactly what I mean when you start using it.